आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फन वेंचर के इस नए वीडियो में। मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स की इस नई वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस की सीरीज़ का चौथा वीडियो है। पूर्व के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप पहले उन्हें देख लें ताकि मर्चेंट ऑफ वेनिस में अब तक की हुई इवेंट्स के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो जो भी नए लोग हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की लिंक उन तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज का वीडियो। एट बेलमोंट, प्रिंस ऑफ अरागन हैज़ रीच टू ट्राई हिज लक इन ऑर्डर टू विन पोर्शिया हैंड। हम जानते हैं एक्ट सेकेंड सीन 9 की शुरुआत होती है जहां पे प्रिंस ऑफ अरागन अपनी एंट्री दिखाता है। ही एक्सेप्टेड ऑल द कंडीशंस रिगार्डिंग द कैस्केट सिलेक्शन। वो कैस्केट सिलेक्शन के रिगार्डिंग जितने भी शूटर्स को ओथ लेनी थी कंडीशन फुलफिल करने के लिए उनको ले चुका है, उनसे अबाइडेड है। हियर वी रीड अबाउट द कंडीशन। इस सीन में हमें ये पता चलता है कि वो कंडीशन कौन कौन सी थी, उनको स्लाइड में दिया गया है। पहली कंडीशन थी नॉट टू रिवील एनीवन विच कैस्केट ही हैज़ चूजन, इन not to court any woman in life if he failed to succeed to win the hand of Portia. Third, he will leave the Belmont immediately. So after watching every casket, Prince closely tried to decide finding the hidden meaning of the statements. Arragon rejects lead casket as it was not beautiful enough for which Arragon should risk all his possessions. Prince rejects golden casket as a statement many men desire, hints him equal to the barbarous multitude. उसको many men desire इंडिकेट करता है कि ये फुलिस मल्टीट्यूड को इंडिकेट कर रहे हैं। So the gold was not also equal to his status and thinking. Thus at last he selected silver casket जिसमें कि ये लिखा हुआ था कि जो मुझे चुनेगा उसे वो मिलेगा जितना वो डिज़र्व करता है। आफ्टर इवेल्युएशन ही हिमसेल्फ थिंक्स सुइटेबल फॉर द पोर्शिया, सो ही चूजेस सिल्वर कैस्केट आफ्टर अज्यूमिंग डेजर्ट फॉर हिम। ऑन ओपनिंग द कैस्केट का सिलेक्शन वो प्रिंस ऑफ अरागन सिल्वर करता है। जब वो सिल्वर कैस्केट को खोलता है, अ पोर्ट्रेट ऑफ द ब्लिंकिंग इडियट इज फाउंड इनसाइड, अ picture of a fool's head. He protests the reward given to him as he has chosen according to his eligibility, by which he thought that he himself suitable for Portia. Finally lamenting, he asked himself, did I deserve no more than a fool's head? Portia reminds him that no one is permitted to judge his own cause. मीन्स कोई भी व्यक्ति अपने खुद के मामले में अपना जजमेंट नहीं कर सकता। स्क्रॉल ऑफ द सिल्वर कैस्केट गिव्स द रियल मीनिंग ऑफ द सिल्वर कैस्केट के स्क्रॉल में हमें पता चलता है कि क्या कहना चाहता था सिल्वर कैस्केट। उसमें लिखा था द फायर 7 टाइम टेस्टेड दिस एंड 7 टाइम ट्राइड दैट जजमेंट इज दैट डिड नेवर चूज a miss, there be a fox alive, I wish silvered over and so was this. मीन्स सिल्वर कैस्केट ये कहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बालों की वजह से सफ़ेद हो जाते हैं बट इनसाइड उनका माइंड ब्रेन रॉ रहता है। Thus was the Prince of Arragon who deserts and departs along with his foolish followers, promising that he will keep his promise to follow the 3 conditions. प्रिंस अरागन इस बात को एक्सेप्ट करता है कि he has taken oath to follow 3 conditions and he will follow the conditions faithfully. Portia is deeply comforted. At this point Portia को बहुत comfort फील होता है क्योंकि उसकी निगाह में प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड प्रिंस ऑफ अरागन both were not the eligible suitors. He recalled the reason of the prince failure. वो जानती है कि वो किस तरीके से फेल होते हैं। कहती है ओ दीज डिलिबरेट फूल्स व्हेन दे डिड दे चूज दे हैव देयर विजडम बाय देयर विट टू लूज। ये ऐसे फुलिस व्यक्ति हैं जिनके पास ऐसी IQ है, ऐसा नॉलेज है कि डेफिनेटली वो मिस करेंगे सही सिलेक्शन करने में। इन सिंपल वर्ड, इवन फूल चूज डिलिबरेटली
फूल भी अपने आप को वॉइस समझ करके अपने रिजल्ट अच्छे पाने के लिए सिलेक्शन करता है, बट दे आर नॉट वाइज एनफ टू फाइंड द राइट मीनिंग ऑफ द थिंग्स, दस देयर एक्सेस फ्रीडम लीड देम टू चूज देयर डिफीट. At this time, a messenger comes, Portia and Nerissa, from a Venetian ambassador who has come with the rich gift. This new suitor is compared so likely an ambassador of the love, and a day in the April never came so sweet. So Portia reacted with neutrality and instructs Nerissa to bring this man in front of her so that she could herself decide. Quick Cupid post, ये सिंबल वहाँ दिया गया है, द मैसेंजर हु कम्स सो मैनरली. Nerissa wished that this new suitor be a Bassanio. Portia it herself has guessed so they decided to choose. Passage first. Nerissa, quick, I pray thee, draw the curtain straight. The Prince Arragon has taken his oath and comes for his election presently. Portia, behold, there stand the casket. Prince, if you choose the wherein I do contend in, straightly our nuptials shall be solemnized. But if you failed, without more speech, my lord, you must be gone from hence immediately. This was the passage. First question goes like this: what proper honor is given to Arragon to indicate that he is prince? Answer: firstly, Portia come to stage to inform that Prince of Arragon has taken the oath and coming for the selection of casket. Trumpet, that was the symbol of the prince and royalty, were sounded as he entered in the room, and Portia addressed him as a noble prince. Portia का address, sound of the trumpet, Nerissa का बताया जाना और उसका अटेंडेंट्स के साथ आना, ये सिंबल थे उसके ऑनर के. Second question, enumerate the 3 conditions at the end. Answer. Question: Arragon agreed to the bond by 3 conditions. First, Prince will not tell anybody which casket he has chosen. Second, failing to choose the right casket, he will never woo a lady for marriage. And third one, if he chooses wrongly, he will depart from the place with any resistance. Thus, he explicitly kept his last condition at the end of the scene as he departed without any argument. बिना कुछ कहे निकल जाना, ये उसकी कंडीशन का फॉलोअर था. थर्ड क्वेश्चन, हाउ वॉज इट अरेंज मैरिजेस थ्रू द लॉटरी सिस्टम विच चांस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल? क्वेश्चन आप देख सकते हैं. आंसर्स पे चलते हैं. इट इज़ नॉट गुड टू अरेंज द मैरिजेस थ्रू द लॉटरी सिस्टम वेयर द चांस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल. पोर्शिया वॉज ऑल्सो नर्वस एंड स्कैर्ड in the beginning, as according to the lottery system, her luck was sealed into the casket. Portia को खुद इस बात पे बिलीव नहीं था कि this was a good system to decide the person for her husband. So, later on, she confirms her father will and decided to get married by the way of her father's will, and declares that if no suitor will be able to select right casket, she will remain maiden like Diana. Nerissa consoles Portia, saying that her father was a virtuous man, so whatever he had decided for Portia will be good, and the person will be lover of Portia who decode the lottery system for the right selection. पोर्शिया को नेरिसा ये कहते हुए कंसोल करती है कि आपको वही व्यक्ति पाएगा जो आपको लाइकली पसंद करता होगा. फोर्थ क्वेश्चन, इट इज सेड दैट द अरागन इज टू प्राउड और सेल्फ ओपिनियटेड. डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? गिव 2 रीजन. आंसर: yes, statement that Arragon is too proud and self-opinionated, as while making selection he calls the common people fool's multitude and barbarous multitude. He says that he will not act or choose as per the common person. Secondly, Arragon thinks himself most deserving suitor for Portia as he inherited from the nobility. रॉयल्टी से होने के कारण वही पोर्शिया का सूटर है, ये उसकी थिंकिंग थी.
Paragraph second, Arragon. What says golden casket? Ha, let me see. Who choose me shall gain what many men desire. What many men desire? That many men may be the meant by the fool's multitude that choose by so, not learning more than the fond eyes that tease, which prize not to the interior, but like a martlet build the weather on the outward wall, even in the force and the road of casualty. I will not choose with what many men desire. So this is the passage from which next question will come. Question first, what does the inscriptions of the gold casket say? Which casket does speaker choose? The gold inscriptions says that who choose with me shall gain what many men desire. जो मुझे चुनेगा उसे वो मिलेगा जिसकी सारे लोग उम्मीद करते हैं, जिसको सारे लोग चाहते हैं, और यही सारे लोग प्रिंस ऑफ अरागन फूल्स मल्टीट्यूड को कहता है. द स्पीकर chooses silver casket. We all know कि Prince of Arragon has selected silver casket because according to him he was most deserving candidate. Second question, how does Arragon interpret the meaning of many men given on the golden casket? According to the Prince of Arragon, many men probably refer to the fool's majority. प्रायः बहुत सारे who have slow intelligence and logic to decide matter wisely. As a result, they decide the matter based on the appearance and outward attractions. Thus, he says that many men take decision on the basis of outward quality and finally they do not care for inner content. So, अंदर की बात पर बिना ध्यान दिए बाहर की बातों के आधार पर डिसीजन लेना बेवकूफ़ों की निशानी है. I will not choose like a foolish. How does Arragon compare the martlet to the foolish multitude? Arragon compares martlet to the foolish multitude. Martlet, instead of seeking the sheltered places for the nest, construct it on the places which is most exposed place like a outer wall which is unprotected from the stormy weather and accident which may occur. मार्टलेट चिड़िया अपने आप को प्रोटेक्टेड जगह पे घोंसला न बना के मंदिर के बाहरी दीवारों पर घोंसला बनाती है जहां पर कि तूफान और बहुत सारी आंधी आकर के उसके घोंसले को नष्ट कर सकती है. ऐसा ही फुलिश लोगों के साथ होता है. गिव द मीनिंग इन द फोर्स एंड द रोड ऑफ द कैजुअलिटी ओपन फॉर द डिजास्टर एंड इन अ वेरी पाथ ऑफ डेंजर मीन्स ऐसी जगह जहां पर कि सब्जेक्टेड टू द रिस्क and the probability of the risk is higher. So it is open disaster and calamity. Indication is given for the fool's person. They do choose as which is subjected to the highly risk. Rank me with the barbarous multitude. I will not put myself into such place level of ignorance and foolishness of the common people. मैं अपने आप के सिलेक्शन के द्वारा अपने आप को फुलिश नहीं कहलाऊंगा. मैं मैनी मैन की तरीके डिसीजन नहीं लूँगा. How is the theme of appearance and the reality brought out in the choice of the casket? Answer, the theme of reality and appearance is brought out in the choice of casket as Arragon rejects the lid casket, calling it base lead because of its dull and plain appearance, while lead was the right casket. So the person who are right do not appears right. He says that the lead must present more attractive show in order to prepare any person to take risk and hazard. Arragon rejects the golden casket, saying that he will not choose even golden because foolish take the decision on the basis of the outward show. So I will not call myself foolish. Thank you friends for watching this. I want to request you, please subscribe, comment and share it to your friends also so that this attempt may reach to them and we can do little better with our little effort. Thank you.